Good morning. Welcome back to the channel Awesome Learning. And in continuation with the topic applications in medicine, we have done two subtopics. One was gene therapy and the other was regarding insulin. Now the third field that we are using biotechnology or this rDNA technology is molecular diagnosis. Okay, this is the third field in medicine, especially. Conventional methods. The conventional methods like serum and urine analysis are not suitable for early diagnosis of the disease. Now, whenever we have certain problems and we go to the doctor, first of all, if it is day one of your fever, first day of your fever, you do not go to the doctor immediately. You take certain medicines at home. And when it is second or third day, then you think of going to the doctor. And after that, when you go to the doctor asks you the symptoms and he tries to give you certain medicines based on those symptoms. But still, if you are not feeling well and you come back to the doctor again, then he will ask you to go for certain test, because the doctor knows that if he asks you to go for the test in second or third day of your visibility of symptoms, the test will not give you the exact results. ओके हम बोलते हैं ना कि एकदम से सेकेंड डे थर्ड डे पे टेस्ट करा लेंगे तो नहीं आएगा उसमें रिजल्ट, बिकॉज इन्फेक्शन जो है दैट हैज स्टार्टेड एंड इट इज ऑन अ वेरी माइन्यूट बेसिस. ठीक है, तो टेस्ट कब आता है, टेस्ट में प्रॉब्लम कब दिखती है, स्पेशली सीरम एंड यूरिन टेस्ट जब होते हैं, सीरम मींस ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट जब होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम कब दिखती है, जब प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी होती है. तो अर्ली डायग्नोस्ड इज नॉट पॉसिबल. कि अगर हम सोचे कि फर्स्ट डे ही हमें रिजल्ट मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल विद दीज कन्वेंशनल मेथड्स. व्हाट आर द कन्वेंशनल मेथड्स? द रेगुलर ब्लड टेस्ट यू गो फॉर और द रेगुलर यूरिन टेस्ट यू गो फॉर. तो एकदम स्टार्टिंग में हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हमें नहीं पता चलेगा प्रॉब्लम, राइट? So it is possible, lekin this can be done by the use of rDNA technology like PCR and ELISA. So nowadays the problem that we are going through is corona. So nowadays we are having this PCR test. जब आप कोरोना का टेस्ट कराने जाते हो, एक होता है रैपिड टेस्ट विच विल इमीडिएटली गिव यू द रिजल्ट, एंड रैपिड टेस्ट इज नॉट दैट 100% श्योर, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि रैपिड में नेगेटिव आया, बट पीसीआर टेस्ट कराते हो तो पीसीआर में इट विल गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट. नाउ व्हाट इज पीसीआर? अब आप लोगों को पता है, यू नो व्हाट इज पीसीआर. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे और हम पता लगा लेंगे कि हमारे पास जो जेनेटिक कोड है, कोरोना का जो जेनेटिक कोड है वो आया या नहीं आया. दिस विल गिव अस. सेम इज विद द ELISA test. So these are DNA technologies can be used in the molecular diagnosis. Now children, as you know, the first one, PCR, polymerase chain reaction. Here what we do is, presence of pathogen is normally suspected only based on symptoms. Now of course if I आज की डेट की बात करें, आजकल की बात करें अगर, तो हम जिस भी इंसान को या जिस भी पर्सन को फीवर, कफ, कोल्ड हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डर रहे हैं, बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक. सो वी इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर कहता है, पहले तो डॉक्टर यही कहता है डरो मत, डोंट पैनिक, बिकॉज वायरल हो सकता है, एंड वो मेडिसिन दे देता है, दवाई दे देता है. तो बेस्ड ऑन सिम्टम्स वो ये काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन अगर वो ऐसा कोई सिम्टम देखते हैं या आपका सिम्टम और बढ़ गया है एंड कोई ऐसा सिम्टम आ चुका है जिससे कि उनको डाउट है इस पैथोजन के होने का, कोरोना के पैथोजन के होने का, then he will ask you to go for the test. By this time the concentration of pathogen is already very high. अगर आपकी सिम्टम दिख रहे हैं तो सिम्टम तभी दिखते हैं जब बॉडी में इन्फेक्शन काफी हद तक फैल चुका है, राइट? However, very low concentration of a bacteria or virus can be detected by amplification.
तो हम टेस्ट अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं और हम तब टेस्ट करवाएं तो हमें ऑफ कोर्स सिम्टम देख के ही हमें डाउट हो जाता है कि हमें लग रहा है जी ऐसी ये प्रॉब्लम है, लेकिन जस्ट टू बी श्योर हम टेस्ट के लिए जाते हैं। लेकिन अगर बहुत लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉब्लम है, जैसे कईयों को कोरोना में ऐसा भी हुआ कि फीवर नहीं हुआ या कोई और चीज सिम्टम नहीं आए, लेकिन उनके फैमिली मेंबर में किसी को था, तो नाउ बिकॉज दे आर अफ्रेड, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर में किसी को है, अभी तक मुझे सिम्टम नहीं आए, तो दैट पर्सन कैन गो फॉर दिस पीसीआर टेस्ट, क्योंकि अभी उसको सिम्टम नहीं आए, इसका मतलब या तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है, और या फिर अगर है तो इट इज ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन। तो अगर उस इंसान को हम फटाफट एम्प्लीफिकेशन यानी पीसीआर टेस्ट के लिए ले जाएं, तो हम उसके पीसीआर टेस्ट से उसको बता सकते हैं कि वेदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इफ यू आर पॉजिटिव तो हम इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, right? So here now what is PCR? The video is given to you, we have already done it. So uses of PCR is to detect HIV in suspected AIDS patient if the patient has suspicion, अगर doubt है कि वो HIV positive है, तो then we go for PCR, or to detect mutations in genes in cancer patients. Now you know that cancer is a cause of mutations, तो उसको पकड़ने के लिए कि कैंसर है या नहीं है, तो हम जीन्स के म्यूटेशंस पकड़ लेते हैं, वी गो फॉर दोज टेस्ट, और हमें पता चल जाता है कि whether the person is suffering from that disorder, or to identify many other genetic disorders also, right? So we use PCR here in these fields. A single stranded DNA or RNA. Now, of course, we need for PCR we need a genetic material. So the genetic material can be a DNA, it can be an RNA. Is tagged. How will we tag it? By a radioactive molecule, and that radioactive molecule is a probe for us. You remember we have done this VNTRs, the probe, okay, and is hybridized to its complementary DNA, okay, in a clone of cells. So if I have taken a DNA, I have just added up a probe here, and then I have hybridized it, यानी I have joined it with its complementary DNA, मैंने उसके complementary DNA के साथ उसको ज्वाइन कर दिया है, लेकिन प्रोब ऐड करने के बाद, एंड व्हाट इज अ प्रोब हियर? द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिससे कि ये डीएनए जो है वो मार्क हो गया, हमने उसको मार्क कर दिया आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय द डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। नाउ क्योंकि आई हैव यूज्ड दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट, I have used this radioactive probe, तो मैं इसे आइडेंटिफाई कैसे करूंगी? ऑफ कोर्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, क्योंकि ऑटो रेडियोग्राफी करूंगी तो मेरा जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इट विल शो मी space in the DNA, and then I can go for the procedure. The clone having mutated gene will not appear on photographic film. Now remember this clone, whatever the mutated gene is, it will not appear on the photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene. Of course, now here it is having complementarity. Here also it will have a complementarity, you see. But here where the probe has been added, there is no complementarity, बिकॉज प्रोब का हाँ तो हमने फॉरेन एलियन ऐड किया है ना यहाँ पर, तो यहाँ तो इसकी कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का तो कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी है ही नहीं। तो जब यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी ही नहीं है विद द म्यूटेटेड जीन, आई विल नॉट गेट इट ऑन माई फोटोग्राफिक फिल्म। द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, राइट? Now you see here, this is ELISA. ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. Now this is the full form of ELISA. एक 1 mark question can come from here. Here children, ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction. Now when here we want to detect a particular disease, so what we do is we try to find out the antigen antibody interaction. Okay, so infection by pathogen can be detected
by the presence of antigens. If the antigen is present, if a particular antigen is present, whether proteins, glycoproteins, etc., then we can say that the particular pathogen is there. Or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen. Now, to fight against these antigens, if my body has created certain antibodies, to fight these antigens, if my body has created certain antibodies, then what will we say कि अगर हमने antibodies बनाई हैं तो तभी बनाई ना कि उसका जो opposite था या उसका जो दुश्मन था वो बॉडी में आया, तो antibodies की presence से ही मुझे पता चल जाएगा कि yes I had the infection. जैसे फॉर नाउ डेज कई लोगों को ये कहा गया है कि कोरोना जो है कईयों को तो पता ही नहीं चला, आया और चला गया. दैट मीन्स दे गॉट इन्फेक्टेड एंड नाउ दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट, बट दे नेवर न्यू एंड दे नेवर वेंट फॉर द टेस्ट. So they don't know whether they had corona or not. So then what is the best thing for that? Go for an antibody test. Now when you go for an antibody test and if your body has produced these antibodies, that means you were affected by the पर्टिकुलर पैथोजन. आपको कोरोना हुआ था और क्योंकि आपको कोरोना हुआ तभी आपकी बॉडी में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बने. So this will prove that the infection was there in your body, right? So this is all about your molecular diagnosis and PCRs and your ELISA.